The CSR function was set up by Polycab in order to give back to the society what we had earned over the decades. So, in order to run this activity, we chose Halol, primarily since our operations were there and we could get enough support in running the CSR activities. We did a survey in and around Halol and found that two villages required the maximum support. One was Zakaria Juna and the new Zakaria. We have adopted a village with a basic purpose of helping and developing that village into a model village. For that, we have got a pronged method for doing it. One is by adopting a village, second is by community development around the location of our factories, and third is by supporting existing NGOs who are doing some work with a cause. For example, women empowerment or child development, that sort of a thing. Taking the Prime Minister's vision forward, we embarked on the Swachh Bharat movement. So together we decided what is the first initiative that is required, and the toilets was the main thing. So we built toilets outside every house, thereby building the hygiene factor or improving the hygiene factor better. રાઠોડ મનુભાઈ કાભાઈ મારું નામ છે, નવા જોખેરા સરપંચ, તાલુકો હાલોલ, જિલ્લો પંચમહાલ. અમારા ત્યાં પંચાયત में જોખેરા ગામ में શૌચાલય નહોતી, ગંદકી બહુ હતી. આ પોલીકેપ કંપની આપી શૌચાલય થઈ અને ગંદકી દૂર થઈ અને જે બહેનોને ભાઈઓને બહાર જવું પડતું ખુલ્લામ એ જવું પડતું नहीं. जो पहले तो कुछ था नहीं, पर जो पोलीकेप कंपनी हमारे गांव दत्तक लिए है ने, तब से एक घर में टॉयलेट बना है. क्या फर्क तो लेकिन सब वो तो खुले में जाने में कि इधर भी इधर क्यों बैठ जाते हैं. अभी तो शौचालय हो गया तो अभी बाहर जाएगा नहीं कोई, किधर जाएगा ना, तो गंदगी दूर तो होगा नहीं. जब से पोलीकेप कंपनी ने हमारे गांव को दत्तक लिया है और वो हमारे घरों में शौचालय बनवा रही है. हमारे गांव में आज तक शौचालय नहीं था, लेकिन पोलीकेप कंपनी ने हमारा गांव को दत्तक लिया और उसके बाद जो शौचालय बनाया उससे लिए बहुत गंदगी दूर हो गई. ऐसा काम पोलीकेप ने किया है जो किसी ने नहीं किया. હું 50 વર્ષની ઉંમર સુધી મારા ગામની અંદર કોઈ શૌચાલય હતું નહીં. પોલીકેપ કંપની આ શૌચાલય બનાવ્યા પછી ગંદકી દૂર થઈ ગઈ છે. એ સરસ કર્યું છે અને પાણીની પણ સવલત થઈ છે. મારું નામ જગદીશસિંહ જામસિંહ યાદવ, વર્ષોથી અહીંયા રહું છું. અમારા ગામમાં ટોયલેટ કે કોઈ વ્યવસ્થા કંઈ હતું નહીં, પણ જ્યારથી આ પોલીકેપ કંપનીએ દત્તક લઈ લીધી ત્યારથી અમારે જો લેડીઝ જેન્ટ્સને બહાર જવું પડતું નથી. અત્યારે સારી એવી સુવિધા છે અહીંયા અને સ્કૂલમાં બી એમ કે સારું છે. અત્યારે જો સ્વચ્છતા બી સારી છે અને અમારા ગામમાં કોઈ બી રોગચાળો એવો કંઈ ચાલતું નથી અત્યારે. We found that even in the high school there were maximum dropouts of girl children. So the reason was that there were no toilets at all. So we built the toilet there and hoping that there would be no more dropouts. And we also created a team of villagers who would be empowered to take a lot of action that was required within the village, and also created a Polycab team who would work together. As a team, we have adopted two villages, जूना जाखरिया and नवा जाखरिया. उसमें हम काफ़ी हद तक काम कर पाए हैं. हर घर में टॉयलेट बनाने का और माल न्यूट्रिशन बच्चों के कुपोषण के लिए प्लस मेडिकल कैंप्स के लिए मोर देन 50% काम हो चुका है. हम सोचते हैं कि छोटे बच्चे वालों में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहाँ भी स्टूल पास कर सकता है, तो उसमें इतना डेंजर बात नहीं है. लेकिन बड़े एडल्ट जो स्टूल पास करते हैं उसकी से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया और जो भी इन्फेक्शन ज़्यादा फैलाने वाला है बच्चों का स्टूल होता है. पर वही स्टूल अगर बारिश जैसा कुछ आता है तो पानी में बह के नदी नाला हैंडपम्प के सोस खाड़े में जाता है और वही पानी वो लोग पीते हैं, जो वो भी डायरिया, वॉमिटिंग, कॉलेरा, टाइफाइड, मलेरिया सभी में वर्क करेगा. और जो वो आज
पॉलीकैब वालों ने जो हाइजीन में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है वो बहुत अच्छा है। મારું નામ હીરાબેન છે। હવે પહેલાં અમારા ટોયલેટ બન્યા પછી અમને ઘણો ફાયદો થઈ ગયો છે। પહેલાં અમારે બહુ ગંદકી થતી હતી, એ ગંદકી હવે દૂર થઈ ગઈ છે। અમારે પોલીકેબ કંપનીએ અમને સારો ફાયદો કરી આપ્યો છે, એથી અમને ઘણો ફાયદો થયો છે। પોલીકેબ કંપનીએ અહીંયા સારી સુવિધા કરી આપી છે શૌચાલયની, એટલે હવે બહેનોને ને છોકરીઓને કે બધાને પણ બહાર જવું પડતું નહીં અને સ્વચ્છતા आगे बढ़वा मारी है। जब से पॉलीकैब कंपनी ने हमारे गांव को दत्तक लिया है, जब से हर घर में शौचालय बना हुआ है। और इसके पहले सब लोग बाहर जाते थे तो गांव में बहुत सारी गंदगी दिखाई देती थी, लेकिन जब से हर घर में शौचालय बना है वो लोग सब इसका यूज कर रहे हैं, तो गांव के 80% गंदगी अभी दूर हो गई है। By the end of March 2016, we would be concentrating on the infrastructure of our village that we have adopted. Secondly, we would be all getting into education and trying to give them sports facilities. We would also set up science lab and a computer lab. We have come a long way since we started this initiative a year and a half ago. Apart from building the toilets that we have been doing so far, we would also look at building the roads as well as bringing lighting, etc. and create a model village that could be replicated across the country. लेकिन ये तो एक अभी एक छोटी सी शुरुआत है। कंपनी पॉलीकैब का विज़न बहुत बड़ा है और आने वाले कुछ वर्षों में हमारी ऐसी उम्मीद है कि हम ऐसे कई गांवों को मॉडल विलेज बना पाएंगे और सोसाइटी के लिए जो बेस्ट पॉसिबल है वो कर पाएंगे। दरेक व्यक्ति का पाया जो होता है वो होता है हेल्थ और एजुकेशन, तो ही उसका डेवलपमेंट होता है, उसके विलेज का डेवलपमेंट होता है, उसके तालुका का डेवलपमेंट होता है। मैं पॉलीकैब वाले को थैंक यू बोलना चाहेगी कि उन्होंने मेरे पीएससी के एरिया का गाँव जो फाइनल किया है उसमें जो बहुत मोस्ट कंपोनेंट है हाइजीन, वही उन लोगों ने एक्टिविटी में लिया है, वो बहुत अच्छा है। પોલીકેબ કંપનીએ અમારા ગામમાં સારામાં સારી સુવિધા કરી આપી છે અને ગામનું વાતાવરણ સ્વચ્છ થઈ ગયું અને સારું થઈ ગયું। જો હજુ પોલીકેબ કંપની અમારા ગામ માટે કંઈક કરશે